सॉरी, लगता है माइक चालू ही नहीं किया था। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारे क्वेश्चन। 52 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। इन पार्टिकल bombardment method for delivering a foreign DNA into target plant cell by using helium gas. Next question, DNA directly inject into the plant protoplast or cell using fine tipped glass needles. Answer will be microinjection. Particle widely used in gene gun is made up. जो हम जीन गन में मोस्टली पार्टिकल यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं? तो आंसर विल बी गोल्डन। Next question, application of an electric current to cell for transforming DNA is electroporation. Next question, introduction of DNA into cell via small lipid artificial vessels is called liposuction. Okay. Next question, the introduction or transfer of DNA into the cell of an organism by a method other than sexual crossing. A translation, B transformation, C transduction, D both A, B and C. What will be the answer? Answer is D, B and C. Okay. Next question, transgenic for male stealthy fertility mainly conducted with which gene? जो ट्रांसजेनिक फॉर मेल स्टेल्टी फर्टिलिटी मेनली कंसर्नेड विथ विच जीन? जो मेल स्टेल्टी फर्टिलिटी मेनली किसके द्वारा किस जीन के द्वारा ट्रांसफर होती है? किराए 2, किराए 1, किराए सेकंड, किराए फर्स्ट एंड बर्नेज एंड बार स्टार, डी किराए फर्स्ट is what will be the answer? Answer will be C, Barnese and Barstar. Okay. The Cry1 protein are insecticidal to Lepidopteran, Lepidopteran insect or Dipteran insect, Coleopteran insect, A, B, both. What is the answer? Answer will be A, Lepidopteran insect. Question number 160. Flower sour is a popular example of which transgenic crop? A, potato, tomato, tomato, brinjal. What will be the answer? Answer will be B, tomato. Flower sour is a popular example of tomato. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड ऑफ रेडी इज पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ विच ट्रांसजेनिक क्रॉप? जो राउंड ऑफ रेडी है वो सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल किसका है? कॉटन का, वीट का, सोयाबीन का? व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी सी, सोयाबीन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलगार्ड वेराइटी ऑफ कॉटन रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच इंसेक्ट? जो कॉटन की बोलगार्ड वेराइटी है वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है? कॉटन बॉलवर्म के, टोबैको बड बॉलवर्म के, या सी पिंक बॉलवर्म के, या ऑल ऑफ दीज? आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. जो टोबैको की बोलगार्ड वेराइटी ऑफ कॉटन है वो कॉटन बॉलवर्म एंड टोबैको बड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, ऑल ऑफ दीज आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड अप रेडी क्रॉप प्लांट
टोलरेंट टू विच हर्बिसाइड? जो राउंडअप रेडी क्रॉप प्लांट है वो किसके लिए टोलरेंट करता है? ए ग्लाइफोसेट, बी पेंडर पेंडामेथिलीन, सी 2,4-D, डी पैराक्वाट डाइक्वाट। व्हाट विल बी द आंसर? तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? राउंड ऑफ रेडी क्रॉप प्लांट टोलरेंट टू ए ग्लाइसोफो ग्लाइफो ग्लाइसोफोसेट ग्लाइफोसेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसजेनिक फॉर मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी मेनली कंसर्नेट विथ विच जीन? बार्नेज, बारस्टार, बार्नेज एंड बारस्टार, नन ऑफ दीज। जो ट्रांसजेनिक ऑफ मेल फर्टिलिटी मेनली कंसर्नेट विच जीन? तो आंसर विल बी सी बार्नेज एंड बारस्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। गोल्डन राइज अकम्प्लिश द रिक्वायरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो गोल्डन राइस है उसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ए डी, विटामिन 12। आंसर विल बी बी। ये तो आप सभी जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विटामिन ए ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज डिनोट बाय? जो प्लांट की सेकेंड जनरेशन होती है वो किसके द्वारा डिनोट करते हैं? T0, T2, T1, T3। आंसर विल बी सी T1 के द्वारा हम प्लांट की सेकेंड जनरेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है। फ्लावर सावर टोमेटो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक टू? जो टोमेटो में फ्लावर सावर कैरेक्टर पाया जाता है वो किसके लिए किस गुड टेस्ट, डीप रेड कलर, फास्ट मेच्योर, डिले रिपेनिंग। तो वो किसके लिए फ्लावर सावर टोमेटो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक टू? आंसर विल बी डी डिले रिपेनिंग। ओके, पहले टमाटर में क्या होता था कि वो प्रोडक्शन तो होता था लेकिन वो जल्दी पकने के कारण उसको हम स्टोर नहीं कर पाते थे। तो क्या हुआ कि फ्लावर सावर जो जीन है टोमेटो में इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इससे क्या हुआ कि डिले रिपेनिंग वो लेट काफ़ी समय तक हम स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो जो पकने जो वो पक लेट रिपेनिंग होती है। ठीक है, डिले रिपेनिंग होती है। ठीक है। द बार्नेज एंड बार स्टार जीन आइसोलेटेड फ्रॉम? जो बार्नेज एंड बार स्टार जीन है वो किससे आइसोलेट किया गया है? वेसिलस एमिलोलेक्यूफेसियंस एंड बी थुर्जेंसियस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजाइन एंड थेरम्स इक्विटिक। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज दैट ए बेसिलस एमाइलोज। जो बार्नेज एंड बारस्टार जीन है वो बेसिलस एंड एमाइलोज से आइसोलेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी जीन आइसोलेटेड बाय? जो बीटी जीन है वो किससे आइसोलेट किया गया है? 169 का क्वेश्चन। बीटी जीन किससे आइसोलेट किया गया है? बार्टन से। जो बीटी जीन है वो किसने आइसोलेट किया? बार्टन ने, पोडर ने, विलियम्स ने या पोवेल ने? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बार्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी जीन आइसोलेट फ्रॉम? ये बीटी जीन है जो किससे आइसोलेट किया गया है?
प्लांट बैक्टीरियम से, सॉइल बैक्टीरियम से, ऑर्गेनिज्म से, एयर स्पोर्ट से। तो आंसर विल बी सॉइल बैक्टीरियम से बीटी जीन को आइसोलेट किया गया है। तो द प्लांट डेवलप्ड विथ अ फॉरेन जीन इज ट्रांसफॉर्मेड प्लांट, ट्रांसप्लांटेड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट, जीएमओ। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज दैट सी, ट्रांसजेनिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राई फर्स्ट प्रोटीन आर इंसेक्टिसाइडल टू लेपिडोप्टेरम टेरन इंसेक्ट, डेप्टोरम इंसेक्ट या कॉलीप्टेरम इंसेक्ट, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द आंसर? जो क्राई वन है वो इस वो किसके लिए इंसेक्टिसाइडल का काम करती है? आंसर इज दैट ए लेपिडोप्टेरम इंसेक्ट। जो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गोल्डन राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आंसर विल बी ए, golden rice is good source of vitamin A. Which of the following cry protein can be used for protection against lepidoptera insect? तो जो लेपिडोप्टेरा के प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करता है वो कौन सा प्रोटीन है? क्राई वन, क्राई टू, क्राई थर्ड, ए बी, बोथ। आंसर विल बी डी, ए एंड बी, क्राई वन, क्राई टू, बोथ। Which of the following promote is used for seed specific expression? 35S, TA29, ADH1, Vicillin. What is the answer? 175 answer will be D, Vicillin. Which of the promoter is specific for anaerobic expression? ADH1, TA29, Vicillin या CRT1? What is the answer? Answer will be A, ADH1. The first transgenic plant was produced in which of the following crop? Tomato, cotton, tobacco, maize. Answer will be tobacco. Next question, the first transgenic was produced which of the following character? Ampicillin resistance, neomycin resistance, kanamycin resistance, hygromycin resistance. What is the answer? Answer is that C, kanamycin resistance. In which year first transgenic plant was developed? जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक टोबैको में डेवलप किया गया था वो किस ईयर में डेवलप किया था? 1973, 1983, 1993, 2003। व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी बी, 1983। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ट्रांसजेनिक वेराइटी फ्लावर सावर वॉज फर्स्ट रीच टू मार्केट? जो फ्लावर सावर ट्रांसजेनिक वेराइटी फ्लावर सावर फर्स्ट रीच टू मार्केट, आंसर विल बी टोमेटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोल्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोटीन? बोल्टिंग मेथड साउथर्न, नॉर्थर्न या वेस्टर्न या ईस्टर्न? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज दैट सी, वेस्टर्न। ठीक है। द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट इज, कौन सी टेक्निक को हम यूज करते हैं जिससे कि डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो सके? साउथर्न ब्लॉटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसएसआर, पीसीआर? व्हाट इज द आंसर? Answer is B, gel electrophoresis is used. The technique is used for to separate DNA fragment. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियाई एसिड फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल टू
nitrocellulose or nylon membranes is known as? Answer will be C, blotting. Next question. A procedure in which RNA fragments are transferred from an agarose gel to nitrocellulose membrane or BDM membranes is known as? What is the answer? Answer will be Northern blotting. Next question. In vitro amplification of DNA is done by polymerase chain reaction, polymerase chain reduction, gel documentation system, gel electrophoresis. What is the answer? Answer is that polymerase chain reaction. Okay, next question. Anal, analyze, analyzing step of PCR involve separation of two standard, rearrangement of DNA, joining of primer to complementary strand या supercoiling. What is the answer? Answer will be C. ठीक है, joining the primer complementary strand. Extension step of PCR occur which temperature? Answer will be B, 72. ठीक है, next question. Which of the following is not used for DNA fingerprinting? इनमें से कौन सा DNA फिंगर प्लांट के लिए यूज नहीं करते हैं? तो वो है ब्लॉटिंग. Short single stranded oligonucleotide that is used for DNA amplification in PCR is cDNA primer, QTL probe. Short single stranded oligonucleotide that is used for DNA amplification in PCR is? What is the answer? Answer will be B, primer. The technique used to separate DNA to separate DNA fragment is Southern blotting, gel electrophoresis, SSR, PCR. The technique used to separate DNA fragments is? Answer will be B, gel electrophoresis. Which of the following is not a PCR based marker? Answer will be ISSR is not a PCR based marker. The fragment of DNA is separate by chromatography, electrophoresis, electroporation, PCR. Answer will be B, electrophoresis. Is the fragment of DNA separate? A small nucleotide sequence of DNA or RNA used to detect presence of complementary sequence from nuclei acid sample. Answer will be D, probes. The PCR technique was developed by? Answer will be A, Kary-Mullis is developed PCR technique. The enzyme used in PCR is TAQ, DNA polymerase, DNA polymerase first, DNA polymerase second, reverse transcription. What is the answer? Answer is A, Taq DNA polymerase. Taq DNA polymerase isolate from amylolipofuscins, Thermus acutis, B, tinctora, B, thermis. Your pronunciation is very difficult. I don't know who write these name. Better. What will we do? The sixth answer will be Thermus
aquatics. Okay. Inheritance pattern of RAPD, random amplified polymerase DNA. So answer will be 97. Answer will be A, dominant. Okay. So next question. The technique of determining the order of base of DNA molecule. DNA sequencing. Answer will be DNA sequencing. Which is the full Next question. Which of the following is a codominant DNA marker? इनमें से कौन सा codominant DNA marker है? A, RFLP, random amplification, restriction fragment length, polymorphism, restriction amplified polymorphism, DNA, SSR, or both A and C. What is the answer? Answer will be answer will be B, RAPD. Which Next question. RFLP was first molecular marker was developed in. Answer will be 1980. जो फर्स्ट मोलिकुलर मार्कर है RFLP, रैंडम फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये किस ईयर में डेवलप किया गया है? तो आंसर विल बी 1918. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिडाइज बेस्ड मार्कर? इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइज बेस्ड मार्कर है? RFLP, रैंडम फ्रेगमेंट रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ, एम्पलीफाई फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रैंडम एम्पलीफाइड polymorphism DNA, single sequence restriction. What is the answer? Answer will be uh, A. A is hybridization based marker. A Answer will be A. RFLP is the hybridization based marker. Sequence information is not required for. Sequence is not required for RAPD, random amplified polymorphism DNA. Single decamer primer used for which of the following, which of the molecular marker? Answer will be RAPD. RAPD marker annihilate to the template DNA, typically at 37 degrees Celsius. AFLP is a type of marker. Dominant. Answer is dominant. Polymorphism is SSR locus typically due to. You polymorphism SR locus typically due to A. Variation in repeat motif. For separation of RAPD, random amplified polymorphism DNA marker, typically dot dash percentage gel is required. 1%, 1.5%, 3%, 5%. What is the answer? Answer is that 1.5% gel is required in RAPD marker. RAPD marker was developed by Potts et al. Fodor, Williams, and none of these. What is the answer? Answer is C. Williams. Which of the following marker is low
reproducible SSR, RAPD, SNP, RFLP. Answer will be B, RAPD. Variation in SSR motif generate due to replication, slippage, unequal recombination, transcription. Answer is that both A and B. Replication, slippage, unequal recombinant. Which of the following marker known as multi-allelic marker? ASSRs, RAPD, RFLP, ISSR. ASSR. Microsatellite are repeats of 1 to 6 BP, 5 to 10 BP, 10 to 20 BP, 20 to 25 BP. What is the answer? Answer is A, 1 to 6 BP. In 1975, the term QTL was coined by Smith, Gelderman, Nathan, Khurana. Answer will be Gelderman. Found in 1975 the term coined QTL. Region or locus on the chromosome associated with the expression of quantity stage is called as BIM, MCS, intron, QTL. Answer will be D, QTL. Which of the following variety is the first in India that were developed by marker assisted selection? A, improved Pusa Basmati, Pusa 1460, Sabarmati, Pusa Basmati, IR 64. What is the answer? Answer is that A, improved Pusa Basmati 1. Which of the following character was transferred in improved Pusa Basmati? First throw, mass, heat tolerance, bacterial leaf blight resistance, cold tolerance, insect resistance. Answer will be B, bacterial leaf blight resistance. Gene dash incorporate in Pusa improved Basmati. Answer is that D, A and B both. In which of the following is required for QTL mapping? Mapping population, polymorphism, polymorphic molecule marker, phenotypic data, all of these. Answer is that D, all of these. Which of mapping population is immortal or permanent? D. Answer will be D, A and C, DH and RILS. Question number 120. In which 220 in which mapping population heterosis effect of locus can be observed? F2 nil, RILS, DH, double haploid. Answer will be A. In F2 mapping population heterosis effect of locus can be observed in F2 generation. Which of the following is utilized as mapping population? Back cross line, recurrent inbred line, double haploid, all of these. Answer will be all of these.
Which of the following method used for QTL identification? Single marker approach, composite interval mapping, single interval mapping, all of these. Answer will be D, all of these. Software package used for QTL detection, QTL cartographer, bioedit, next gene, mega 4.0. What is the answer? Answer is QTL cartograph. Uh, distance distance of marker in linkage map is defined by unit of A. Answer will be A. And software package used for contribution of linkage map, map marker, bioedit, GMAP, mega. What is the answer? Answer is map marker. Software package is for used for construction of linkage. Okay, so enough, that's all for today. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे अपकमिंग एग्जाम लाइक एंट्रेंस एग्जाम फॉर BHU एंड नेट GRF एग्जाम. दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं ऐसे ही और भी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और मे भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. ठीक है ना? थैंक यू.